In the parties, taking the selfie with celebrities, and now you yourself have become a celebrity. आपका एक song आ रहा है, so how does it feel? It feels amazing. So honestly, it's been my dream since I'm a child कि मुझे celebrity बनना है. I want to go into this field. So yes, I'm really happy, and it's all because of you guys, all because of my family, because of my mom. It wouldn't be possible. मतलब आप बचपन से अट्रैक्टेड थी कि इस इंडस्ट्री में आपको जाना ही है? हाँ, बचपन से, मतलब जो और कुछ नहीं बनना था, मुझे एक्टर बनना था बस. आपका इंस्टाग्राम हम देखेंगे तो काफी इमेंस टैलेंट भरा हुआ है. सो हाउ डू यू डू ऑल दिस स्टफ? मतलब स्टडीज भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है. I think it's about passion. Like if you really love something, if you really want to do something, it attracts you towards it, and हो जाता है सब manage फिर. Aman, tell us how you become a part of this project. I've known the director Rohan Ragani since a very long time. We have done a couple of projects together. और बस हमारे एक रिलेशनशिप ऐसा है कि हम बहुत कंफर्टेबल है साथ में, एंड वी शेयर दिस बॉन्ड वेयर वी आर वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर, वी क्रिटिसाइज ईच अदर बट फॉर द बेटर. एंड आई थिंक इस रिलेशनशिप की वजह से ही आई वॉज कंसिडर्ड टू प्ले दिस प्राइमरी पार्ट इन द म्यूजिक वीडियो. एंड आई थिंक द एंटायर टीम ऑल्सो फेल्ट कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड एज अ नॉन स्क्रीन कपल. So जैसे ही अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, आई वॉज रियली एक्साइटेड, आई वॉज थ्रिल्ड, एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मैं अपना पूरा 100% दूँ, एंड इस वीडियो को सक्सेस बनाने के लिए. एंड यस, सो आई जस्ट वांट टू थैंक द होल टीम. जब ऑन स्क्रीन की बात आती है तो काफी केमिस्ट्री दिखाई दे रही है वीडियो में. तो आप लोग पहले से फ्रेंड्स थे या फिर ये वीडियो के बाद हुआ? कंप्लीट स्ट्रेंजर्स. कंप्लीट स्ट्रेंजर्स. हम एक ड्राइव पे गए थे, उधर से हमारी आई थिंक फ्रेंडशिप शुरू हुई. वी स्पेंड टाइम टुगेदर. दैट्स हाउ आवर केमिस्ट्री स्टार्टेड बिल्डिंग अप. मतलब आई हैड हर्ड अबाउट मलाइशा एंड आई हैड सीन हर परफॉर्म इन अ फ्यू इवेंट्स, एंड मुझे लगा था कि वो बहुत टैलेंटेड है. एंड जब हम पहली बार मिले फॉर द डिस्कशन ऑफ द वीडियो, we instantly connected because we are both movie buffs, Bollywood fans, and then we spend time together, and it was, I think when you're doing a genre like love, it is important to keep that awkwardness aside and just get comfortable. Yeah, you have to know your co-star really well. For sure, and I think वही हुआ, and I think it's come on screen. I think we are comfortable with each other, very comfortable. That's how the chemistry came on screen. Okay, so comfortableness तो दिख रही है, लेकिन how was the experience working? क्योंकि स्टार्टिंग में तो आज आपने बताया कि स्ट्रेंजर थे, फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई, तो ये सफर हमें बताइए. I think it's about time. So we spent a lot of time together. It happened, and yeah. What about you, Aman? I think it's been a big learning experience. I had a great time on set, being in front of the camera. But I think the one thing that kept me wanting to work
was the fact that the team was so passionate and was so driven to just make this a success that yes, everything just came together. कुछ challenges आए हमारे सामने, but I think उनको हमने एक साथ as a team we dealt with them. And yeah, I think. And we have learned a lot from this music video. Like as actors, as dancers, we have learned a lot. And it's the experience, first experience. I'd like to say that this was a surreal journey with a few bumps and jerks. And when this comes on screen, it feels like the smoothest ride of all time. Yes. Okay. इतनी सारी बातें हो रही है एक्टिंग को लेके, काफी पैशनेट भी दिख रहे हो, तो who is your inspiration, both of you? So mine is Alia Bhatt, my all-time favorite inspiration. So I recently saw Gangubai and I was like, this girl is something else only. Matlab, she has another approach towards everything. Her vibe is different and she's just amazing. And I just hope one day I can reach little where she is right now. But yeah, I just love her. She's too good. Okay, what about you, Aman? If you talk about an actor, I would say Ranveer Singh. I think वो बहुत versatile हैं. उन्होंने बहुत अलग-अलग किरदार निभाए हैं. And I also hope to be playing such different characters at some point. And अगर कोई personal inspiration लूँ तो I would say my brother, because he was also a big movie buff. I started watching films because of him, and I think I would give him a lot of credit for where I stand today. Yeah. Okay, इच्छाएं जाहिर करते हैं कि हमें इस फील्ड में आना है. How your family responded to this? My family has been really supportive since the start. My dad, my mom, my mama, everyone. All of them have been Bollywood buffs. So they have been really supportive. They always, whatever I wanted to do, they always supported me. My passion, my dance, whatever I am today, it's because of them. Because सीखने के लिए भी you have to go to classes, workshops, सब उनकी वजह से हुआ, and that's how. मैं थोड़ा सा रविश तुरानी साहब की शादी का वो जिक्र जरूर करना चाहूँगा. वहाँ कैसे हुआ? सलमान ऑलवेज कैरी 6 to 7 bodyguard along with him. You went to me, he was so humble to you. Tell us if you can throw some light on that incident. So Salman sir, so I just came for dinner over there and मैंने press देखी, मुझे कोई आने वाला है, तो मैं side में खड़ी थी and Salman sir just came and I got numb over there. I was like, what's happening? मेरी तो हिम्मत नहीं थी जाने की उधर. He just saw me and he called me and everything just happened in a moment. I was getting jitters. सब हुआ, फिर मुझे बाद में पता चला कि क्या हुआ, अभी कुछ हुआ क्या, because I was numb. I didn't know what was happening. It was just like all in the moment. I was really happy. Salman sir has been really sweet. And the video was everywhere, it got viral, it was everywhere. Yes. How you reacted? ये तो हो गया आपके सामने, it happened in front of you. Post that, that event, video got viral everywhere. I was how you very reacted happy. and how you came to know about it? I was very happy. So after it just happened like when the thing came, and then next minute it was on Viral Bihani, it was everywhere, and I was just like, this is the what I wanted. And when I met Salman sir, so he's been like my childhood favorite. उनकी सारी फिल्में देखी है मैंने start से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. And after that, obviously, it gave me a name, Selfie Girl, because of Salman sir, because of everything. Do you consider it as a turning point in your upcoming career of yours? Well, it was a phase of my life. It was a turning point because everyone knew me after that, थोड़ा, but yeah. आपने अभी आलिया का जिक्र किया कि आप उनसे बहुत इंस्पायर हैं, उनके जैसा बनना चाहती हैं, इंडस्ट्री में कुछ करना चाहती हैं. कंगना रनावत क्यों नहीं? Kangana Ranaut, it's about individual choice. Every actor is amazing. They are very good. सबकी individual choice होती है, and I personally believe that Alia Bhatt is my individual. I love Kangana Ranaut. उनकी Queen movie तो was very good. Everyone is good as an actor, as an individual, but सबका एक personal favorite होता है, तो मेरा Alia Bhatt है. अगर given a choice, किसी के साथ काम करने का मौका मिले, किस डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे? Karan Johar, my dream director. आप देख रहे हो Karan sir, he is my dream director. His films, all his films have been so amazing. The storyline, everything has been so amazing that it's just like उनके साथ काम करने का मौका मिल गया. Obviously you get to learn a lot from him. As an actor also you get to learn a lot from him. So I hope one day, fingers crossed. Amazing, because obviously I know both of them. One of them is my cousin and one of them is my best friend. So I knew that this was going to be something magical because I've seen their talent individually and I've seen the way they work,
and because obviously this was a new side for Malaisha and this was a obviously known side to Aman, where they both were literally crisscrossing what they really do. I mean, Malaisha dances really well and she has her elegance, and Aman's amazing in acting. He's amazing with emotions. So when this crisscross happened, a lot of work, a lot of workshops in a sense, lots of bonding that happened, and throughout that is what we see today out there. That result wouldn't have come without this whole journey. So that's what I would give it to. इस वीडियो को शूट करने में कितने challenges face करने पड़े? I mean, हर वीडियो में शूट करने में challenges होते हैं. So a lot of changes, a lot of change in the edits, delays, schedules, and everything that we have led up to like right now. I think challenges थे, but we have gotten through and we have gotten this result, and obviously go give it all the love that it deserves, because at this point the amount of effort that we have put in, the ups, the downs, I hope you all really like it. Okay, आपका विजन क्या था इस सॉन्ग को लेकर? मेरा विजन था कि आजकल के म्यूज़िक वीडियोस में obviously the music is what drives the whole thing. I had that a story in mind, which obviously you can see through a song. It's a modern era story and it's a teenage love story, but with a glamorous twist on it. आजकल के obviously as you see the tons of music videos out there, it's the song that drives it, but here the emotions, the dance, the chemistry, as you all called out for, is what makes the song what it is. That glamour factor that you saw, the lights, the the glitchy text, everything, it is what I envisioned it to be. So I'm really happy. Okay, Malaisha is a talented kid, right? तो उसको tackle करने में, उसको handle करने में या फिर उनको train करने में कितना time लगा? I mean, journey था definitely. I mean, we took about approximately 3 to 4 months. Lots of time spending with her co-star, lots of time understanding how she should be in a particular situation when she's on set, and obviously on set she was there, she was in the zone, and obviously Malaisha and Aman, the fact that they built that bond throughout is what today I would say that these two, if they work on more projects later on, they would definitely kill it. There's a very important part. आप एक कहानी कह रहे हैं और वो भी गानों कोरियोग्राफी के माध्यम से. तो आप दोनों के लिए कितना चैलेंज था जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया? ब्रीफ डायरेक्टर वो ब्रीफ कि भाई ये स्टोरी है और हमें पैटी हैपनिंग का नंबर बनाना है जो आज की जनरेशन को अट्रैक्ट करे और उन जैसा वो अपने आप को रिलेट कर सके. तो मलाइशा को तो हम बहुत पहले से जानते हैं, तो आप लोगों ने तो मलाइशा का एक सेमी क्लासिकल साइड नहीं देखा है. तो जब हमें बताया गया कि ये एक वेस्टर्न सॉन्ग है और इसको इस तरह से करना है कि बहुत फन हो, इन्जॉय हो, तो मैंने बोला वाह, पर ये तो नया प्रोजेक्ट है. मलाइशा ने हमें बस सेमी क्लासिकल करते हुए देखा है. तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, लेट्स लिसन टू द स्टोरी. एंड जब हमने स्टोरी सुना तो मैंने बोला कि ये काफ़ी एक अलग पिक्चराइजेशन होगा ऑफ मलाइशा जो लोगों ने नहीं देखा है, और वो इतना फन होना चाहिए. तो बैठ के फ्रॉम डिटेलिंग ऑफ कैसे वो वॉक करेगी, कैसे उसका देखने का नज़रिया होगा, कैसे वो अमन और उसका केमिस्ट्री होगा, फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, एवरीथिंग हैज़ टू बी सेइंग समथिंग और द अदर. तो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है. और फिर दूसरा ये बात भी है ना कि जैसे तुम एक इंसान को अचानक से कुछ एक नया स्टाइल, डांस स्टाइल करते हुए देखते हो, तो उसमें इतना स्कोप होता है टू कीप चेंजिंग द स्टेप्स, टू कीप एडिंग अ स्टोरी. फिर आज हम करते हैं कि कैसे मलाइशा बस एक क्लब में वॉक करेगी और उसको हम कैसे एक डांस मूवमेंट में बता सकते हैं. तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे नए एक्सेप्ट के साथ हमने डाला है विद दिस होल आइडिया. तो फिर काफ़ी मतलब नया था हमारे लिए भी. और फिर मलाइशा तो मतलब एज अ स्टूडेंट टू बिकमिंग लाइक अ स्टार नाउ, इट्स लाइक अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस सो फार हमारे लिए भी. आपसे कहना चाहूँगा, दुनाली की जब मैं बात करता हूँ, इस तरह के बहुत से गाने आए हैं जहाँ गोली, अखियों से गोली मारे, और हुक स्टेप भी हमने बहुत देखे हैं. तो हुक स्टेप इज़ वेरी यूनिक, जो हमने पहले नहीं देखा. जब मैं कोरियोग्राफी की बात करता हूँ, हुक स्टेप पे कितना काम करा आप दोनों ने? आपको लगा कि नहीं यार ये है हुक स्टेप? हुक स्टेप तो हमारे ओरिजिनली क्रिएट हुए थे 15-16 जिसमें से कट डाउन, शॉट डाउन होके सिलेक्ट हुए 1, 2 एंड द फाइनल वन वाज दिस वन व्हिच वाज वेरी मच अट्रैक्टिव, व्हिच वी फाउंड दैट दीज गाइज were doing really amazing. They were going in the field and everyone will copy, will follow it amazingly, and this was something new. Like we wanted कि कुछ नयापन आए उसमें, कुछ अलग रहे और कुछ मज़ेदार के शब्दों को करने में मज़ा आए. वो एक बार फ्लो पकड़ लिए, so that will be a new thing to do. वैसा
और जो हुक स्टेप की बात भी करें ना कि मतलब आप जितना भी डिफ़िकल्ट स्टेप करें पर अगर वो मासेस को हिट ना हो, अगर एक नॉन डांसर ऐसे क्लब में जाके अगर ये इजीली बैठे बैठे भी ना कर पाए तो फिर मज़ा क्या उस हुक स्टेप का ना। तो मतलब काफ़ी सारे हुक स्टेप बनाने के बाद एक सिलेक्ट करना है, ये फाइनल होगा, ये फाइनल होगा। और काफ़ी सारे नॉन डांसर्स को सिखाया गया है ये स्टेप, देखते कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे कुछ करना है, so I was like ठीक है, you know, कुछ करते हैं। And then I called my nephew. I said, "Beta, give me a song." He said, "Mommy, I need some time." And ऐसे बनते बनते उसने गाना भेजा, गाना रेडी हो गया। 2 महीने लगे गाना को रेडी होने को, बट बहुत ही हंसी मजाक में किया हमने ये सब। मतलब एज इफ लाइक मतलब इतना नहीं पता था कि एंड पे पहुँचते पहुँचते इतना सब सीरियस हो जाएगा। वो गाना हुआ, देन माई डॉटर सेड मम्मा आई वांट नत्या सोशल बिकॉज दे आर द बेस्ट। फिर उनको लिया अंदर। देन एक्चुअली माई हस्बैंड हेल्प द एंटायर स्ट्रक्चर, जो पूरा स्ट्रक्चर था सबको प्लेस करना, पूरा जो थीम, आई वॉन्ट टू से दैट द थीम ऑफ द सॉन्ग इज हिम। द होल the meeting of the girl and the boy through Zoom meeting and everything is all ideas were him. And we just met at a coffee shop, all of us, and we just started, and here we are today. You know, it's like it's very surreal for me, and it's very I'm very proud of everybody. It was her dream and I had to fulfill it. I can't tell you कितना home production है। मतलब I am the producer, my daughter is the actress, my nephew is the editor and the director, he is a song composer, his best friend is the male actor in it, my husband has handled the entire theme, my brother, a big shout to him, he is in the digital media. This entire event where we are today at the club, my cousin is handling the event here. So this song is a labor of love, but I think जैसे करण जौहर बोलता है ना, family is everything. So it is like a full family project. मतलब बाहर से कोई है ही नहीं ऐसा सब। और जो नत्या सोशल भी हमारे से इतना अच्छा, we've had a fun time. Every night they used to come, we used to eat, we used to drink, we used to dance, we used to have so much fun. My husband has a great sense of humor. तो सबको हंसाना, सबको मस्ती कराना, we used to eat, we used to party together, and हंसते खेलते बन गया एक्चुअली। पता भी नहीं पड़ा कैसे कितने महीने, 6 महीने गुजर गए, यू नो। आई वुडंट से एनीथिंग राइट नाउ, बट होगा, और आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर समथिंग विल हैपन। अभी ये ऐसे रुकेगी तो नहीं, शी इज गोना नाउ शी विल स्टार्ट मम्मा माय सेकंड प्रोजेक्ट। जैसे उसने फर्स्ट शुरू किया था कि आई वांट टू डू समथिंग, यू नो, so I said, okay, I will do something for you, and I'm hoping today she's happy. Very happy. Thank you so much. Thank you. हाँ, we will look into it. अभी तो journey शुरू हुई है. First, we would want to see how the audience is accepting this song, which I'm hoping that there's a lot of hard work gone. मतलब, I think one thing I would salute producers and directors, the big ones who make movies that we repeatedly see, because it is too much hard work. एक गाने में हमको पता चल गया कि कितनी मेहनत है, वो पूरी पिक्चर बनाना, and that movie becomes like a silver jubilee. It is a lot of hard work, guys, lot of hard work. So I have understood it's not all glamour, it's a lot of hard work, and inshallah, of course, if I get another opportunity to do something with my daughter, I will, and you all will be here again interviewing us and you know, spreading it out. Yes. Okay, anything else that you would like to add? Just go share the song, show it to your loved ones, you know, dance on it, make reels, and Go to Jam Productions tag India. us, and yeah, just enjoy the song. And the more inspiring, you know, it will become more inspiring for us if you guys go and, you know, go out and share We'll this be motivated as much to make as another you project. can on to the public, to the platform. We can do more work, you know, and we can bring in, like, we can show more talent. There's a classical side of hers which I would love the world to see my daughter dancing on it. So yeah, I mean, there you go, I've given you a hint already. So let's see, but Ganpati Jai Bappa Mata Di. Moria.
जय माता दी. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all for being here. Thank you so much.